तो ऐसा कुछ रास्ता है अभी। मतलब चढ़ते हुए लगा टाइम। तो टाइम टू लीव। तो हम लोग निकल चुके हैं देहरादून के लिए। मतलब हमने झड़ी पानी में मज़े तो बहुत मारे, इन्जॉय किया हमने, पर वो जो ट्रैक था ना, मैंने जाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, आते हुए मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब हम निकल रहे हैं, अच्छी कहाँ पे जाते हैं। और बाइक जब खड़ी रहती है ना, अलग अलग मतलब आर के अलग मज़े हैं। एग्जॉस्ट का मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि भैया एग्जॉस्ट चेंज कराओ। तो देखो अभी ना मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि इसके लिए बेस्ट एग्जॉस्ट कौन सा रहेगा। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है एग्जॉस्ट के पीछे भी, क्योंकि इन दी एंड आप अपनी बाइक के साथ कुछ कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ही। जो बेस्ट चीज़ मैं ढूंढ पाऊंगा ना इसके लिए वो लगाऊंगा इस पर, जिससे मेरे को हाँ फ़र्क, पावर में भी फ़र्क पता चलेगा और आवाज़ भी ज़्यादा अच्छी है। मेरे को इसकी स्टॉक आवाज़ वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, पर वो वही बात है कि देखो 5000 RPM के ऊपर ना, और हाईनेस चल रही है हमारे साथ। ये भैया भी ऊपर थे झड़ी पानी में, तो ये भी भगाने लग गए, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ थोड़े मोड़ ना थोड़े ब्लाइंड है, तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से आ रहा है। ये पटाखे भाई, डेविल के पटाखे सुन रहे हो। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम भगा रहे हैं, तो हम एक्चुअली वी आर नॉट रेसिंग, हम लोग एक साथ चला रहे हैं कोऑर्डिनेशन पे। तो ये मैं सुना हम थोड़ा एग्रेसिवली चला रहे हैं, ऐसा सीन नहीं है।
So it's time to leave. अपन लोग निकल रहे हैं वापस देहरादून के लिए।